Let f of x be 2 plus cos x for all real x. Statement 1. For each real t, there exists a point c in closed interval t to t plus pi such that f dash of c is 0. Because, statement 2, f of t is equal to f of t plus 2 pi for each real t. Statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 1 is a correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is true. Statement 2 is not a correct explanation for statement 1. Statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true. ओके, तो सबसे पहले फंक्शन नोट डाउन करेंगे. ओके, फंक्शन नोट डाउन करेंगे. ठीक है. Statement 1. For each real t, there exists a point c in the closed interval t to t plus t pi such that f dash of c is 0. तो f dash of x निकालेंगे. What is f dash of x? 0 minus. Yes, minus. ओके, अभी ये जो माइनस साइन x है, क्या हम इसका ग्राफ बना सकते हैं? ऑफ कोर्स वी कैन. ओके, 0 pi 2 pi minus pi and minus 2. That's enough. ओके, तो ये रेड वाले हैं उनके मिड पॉइंट्स. अब अगर साइन एक्स का ग्राफ निकाला तो वो ऐसे आए, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ग्राफ फ्लिप हो जाता है अबाउट y एक्सिस, सॉरी अबाउट x एक्सिस. आई होप एवरीबडी नोज दैट. तो इसका मतलब 0 से पाई ये आएगा ऐसे और पाई से 2 पाई ये आएगा ऐसे. It's not a semicircle by the way. Something like that. Okay, then for a 0 to minus pi, minus sin x is positive. Okay, it's going to be something like this. Let me know if that is clear. Okay, अभी इसे हम क्या बता सकते हैं? इसे हम ये बता सकते हैं कि minus sin x is equal to 0 at x equal to n pi, n belongs to integer. ओके, अभी इसकी लेंथ कंसिडर करेंगे t to t plus pi की. It's a closed interval by the way. Okay, that's important. Length of closed interval is the final point minus the initial point, that's pi. Okay, इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि if we consider any arbitrary t we guarantee the solution of minus sin x equal to 0 or sin x equal to 0, doesn't matter, in closed interval t to t plus. अब इसके दो पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे. सबसे पहले t को 0 है क्या? t को 0 आ रहा है तो हो ही गया. अभी अगर t पे t को 0 नहीं है, okay, let's consider something here. Let's consider this value of t. अभी अगर यहाँ पे 0 नहीं आया वो, तो हमारे पास सिर्फ वो पॉइंट नहीं है, हम लोगों को थोड़ा दूर भी जाना है पाई यूनिट्स, वो इंटरवल है हमारा, तो उसमें हम लोगों को पक्का एक बार तो 0 मिल ही जाएगा. Hence we guarantee the solution of minus sin x equal to 0 or sin x equal to 0 in that, and therefore statement 1 is true. समझ में आ गया?
That is why the graphs of the functions are important. Okay, and that's why I'd also asked you to plot the same. If you haven't yet still done it, please do it. It is going to be very very important both in maths and in physics. ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू हो गया, तो ऑप्शन डी इज गॉन. Let's go to statement 2 now. What can you say about statement 2? F of t. So it is true. It is true, correct, because cos x is periodic with period 2 pi. Okay, cos x is periodic with period 2 pi, and therefore 2 plus cos x is also periodic. Okay, so statement 2 is true. C is gone. Okay, now does B explain as does statement 2 explain statement 1? उसके बारे में बात करेंगे. Okay, so statement 2 is saying f of t is equal to f of t plus 2 pi for each real t, and statement 1 is saying there exists a point such that derivative is 0. Now see, there is something that we must understand here, and that is जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को स्टेटमेंट्स 1 और 2 के बारे में मिली है वो बेसिकली यहां से मिली है ना. अभी अगर हम ये कंसिडर करेंगे कि ओनली दिस इज ट्रू, सपोज f is periodic with period 2 pi. Not specifically talking about this, but I'm considering in general any function. Suppose f is periodic with period t equal to 2 pi. Does it guarantee that f dash of c is 0? It doesn't. Periodicity can never tell us anything regarding continuity and differentiability. मैं आपको इसका एग्जांपल दे रहा हूं अभी. Consider this function f of x is equal to x. Okay, f of x is equal to x when x lies between minus pi and pi, and f of x equals f of x plus 2 pi. इसका अगर आप ग्राफ निकालोगे ना तो वो ऐसे आएगा. माइनस पाई से पाई वो y इक्वल टू एक्स का पार्ट बन जाएगा, और उसके बाद ये फंक्शन ऐसे होगा. So it's going to be a periodic function whose graph will be something similar to फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स. ये उसका ग्राफ हो जाए. अभी ये जो फंक्शन है ना इसके लिए स्टेटमेंट 2 सही है, बट स्टेटमेंट 1 इज नॉट. क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे डेरिवेटिव 0 हो. डेरिवेटिव अनडिफाइंड है इस ऐसे पॉइंट्स पे क्योंकि वहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है.
but nowhere the derivative is 0. So just periodicity is never enough for differentiability, or forget about derivative taking a specific value like that. अगर क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है हम लोगों को, अगर हम लोगों ने 2 प्लस क्लासेस कर लिया वहीं पे सारी चीज़ें हो गई। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक ऐसा फंक्शन चुना जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो, क्योंकि ऑप्शंस ए भी क्या बता रहे हैं कि स्टेटमेंट 2 इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट 1। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोगों ने तो वही फंक्शन यूज किया, द प्रॉब्लम इज, क्या स्टेटमेंट 2 से स्टार्ट करके स्टेटमेंट 1 तक पहुंचा जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा फंक्शन अभी सजेस्ट किया, हम लोगों ने अभी ऐसा एक फंक्शन सजेस्ट किया जहां पे स्टेटमेंट 1 गलत है लेकिन स्टेटमेंट 2 सही है, which also means that statement 2 is not enough to establish the proof of statement 1, and hence we go for option B. We go for option B, we reject option B, because it is not the correct explanation, because that is not always going to give you existence of derivative. Forget about derivative being equal to 0.